Okay, so we talked about principles of treatment. Now let's talk about principles of prevention. Now, this word prevention means to stop. Okay, so you people must have heard this the saying like prevention is better than cure. So it's always better to prevent the disease than to cure it. Okay, now why so? Because there are some limitations. Okay, when you want to get rid of the infection from your body, and naturally you need some treatment, but to that treatment there are some problems also that we have to deal with. So let's talk about it now. See what happens, that how to get rid of the infection in someone who has disease. So there are three limitations to this approach, that is when we deal with the process of getting rid of the disease. So the first one is, if someone has a disease, their body functions are damaged, of course, because of the microbes, because of the pathogen that are disease causing microbes. The body functions are damaged. Naturally, we know that when we are not well, we are not as energetic as we are usually, right? So our body functions damage. The first reason. The second reason is that treatment will take time, right? Means it's not that if we fall sick and just immediately after one day or so we just get cured. No, not like that. It takes time. Now, which means that someone suffering from a disease is likely to be bedridden for some time, even if we can give proper treatment. So naturally the patient has to take rest to undergo that process of treatment, right? So that will be there. And the third reason is that person suffering from infectious disease can serve as the source for from where the infection may spread. So because the patient has to be bedridden for certain days or till the patient gets recovery, during that time it may be possible that that person may spread the disease. All right, so again this cycle can goes on. All right, now because this can go on, and so these are certain limitations that we need to deal with, we have to deal with rather during the process of treatment. And that is why prevention of disease is always better than cure. Now the question here is that how can we prevent disease? Okay, how can we prevent diseases? So basically there are two ways. One is general and the other one is specific to each disease. So there are basically two ways through which we can prevent disease. One is general, which can take care of the general ways of general disease, general, ways through which the disease is spreading, and one is specific. So when we talk about the general ways of preventing infections, they relate to exposure. Okay, and how can we prevent exposure to the infectious microbes? So again it depends the means of spreading. मीन्स कैसे स्प्रेड होती है डिजीज, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें इन्फेक्शियस माइक्रोब्स के एक्सपोजर से कैसे बचना है. हमें पता है कि इन्फेक्शियस डिजीज होती है वो स्प्रेड होती है, वो इन्फेक्शियस माइक्रोब से स्प्रेड होती है. तो इन्फेक्शियस माइक्रोब से ही हम अगर एक्सपोज ना हो तो नेचुरली वी कैन prevent ourselves from getting exposed, right? So we can get some easy answers. Now again, this this prevention is depending on the means of spreading. So जो भी हमें पता है means of spreading में हमने देखा था वो चार्ट, कुछ एयरबोर्न डिजीज होती है, कुछ वाटरबोर्न डिजीज होती है, कुछ डायरेक्ट टच से होती है, कुछ इनडायरेक्ट टच से होती है. तो अगर यही स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज के जो मीन्स हैं, हम इसी को ही अगर ध्यान दें इस पे ही, तो काफी सारे हद तक हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. सो for airborne microbes, we can prevent exposure by providing living conditions that are not overcrowded. So, living conditions overcrowded नहीं होनी चाहिए for airborne diseases. अगर हम waterborne disease की बात करें, तो we can prevent exposure by providing safe drinking water. Naturally, जो waterborne disease हैं,
उसमें हम कैसे माइक्रोब्स के टच में आते हैं? बिकॉज ऑफ द अनहाइजेनिक और अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अगर हम क्लीन ड्रिंकिंग और सेफ ड्रिंकिंग वाटर का यूज करें तो नेचुरली वाटरबॉर्न माइक्रोब से हमें प्रिवेंशन मिल सकता है। एंड दिस कैन बी डन बाय treating the water to kill the microbial contamination, right? Then there are diseases which spread through vectors. So for vector-borne diseases, we can provide clean environment. हमें पता है कि vector मतलब कुछ organisms होते हैं, like mosquitoes होते हैं, flies होते हैं। तो अगर हमारा environment clean रहता है तो ये vectors ही नहीं होंगे। vectors नहीं होंगे तो vector-borne infections भी नहीं होंगे, right? So this would not, for example, allow mosquito breeding. Okay. In other words, public hygiene is one basic key to the prevention of infectious disease. So सबसे main चीज है hygiene. Public hygiene बहुत ही important और basic key है to prevent ourselves from any kind of infectious disease. See, it's not that we are 100% sure, okay? But still, there are high likely chances that we would not get affected if we take care of the hygiene things, okay? So like that. So पहली चीज है hygiene रखना, depending on the spreading of the disease. Now, in addition to these issues that relate to the environment, there are some other general principles also. So वो कौन से principles हैं? So ये कुछ basic principles थे जो हमने बात की, अभी दूसरे कौन से general principle है? To appreciate those principles, let's ask a question we have not looked so far. Normally, we are forced with infections every day. Okay? हमें पता है कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि समटाइम we go out, we go to the school, we go to the we meet friends, we eat outside, so we are facing infections every day. So if someone is suffering from cold and cough in the class, it's likely that the children sitting around will be exposed to the infection, but all of them don't actually suffer from the disease. Naturally, क्यों ऐसा होता है? Because उनकी immunity अच्छी होती है, इसलिए, right? So now we are coming to the immune system. तो ये कुछ चीजें हैं जो specific हम टारगेट कर सकते हैं। अगर हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी है तो अगर हम एक्सपोज भी होते हैं तो हमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम हमारी बॉडी को नहीं होगा, राइट? सो why is it so that some people get infected while others are not? This is because the immune system of our body is normally fighting off the microbes. So कौन सफर करता है ज्यादा, कौन नहीं करता, वो डिपेंड करता है इम्यून सिस्टम पे, उस पर्टिकुलर पर्सन के. So we have cells that specialized in killing infecting microbes. ये हमें पता है, इम्यून सिस्टम में कुछ सेल्स होते हैं. Best example, white blood cells. Okay, these cells, they go into action each time infecting microbes enter our body. तो जब भी माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो वो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनके लिए वो फॉरेन बॉडी होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्मफुल होते हैं, इसलिए दे बिकम एक्टिव. Okay, they come into the action, white blood cells or immune system cells. If they are successful, they are means immune system. If they are successful, then we don't actually come down with any disease, means we get cured. अगर immune cells जो होते हैं वो मैनेज कर लेते हैं किल करने को infectious disease को, तो हम ठीक हो जाते हैं, right? As we noted earlier, if the number of infecting microbes is controlled, the manifestation of disease will be minor. हमने देखा अभी कि ये सब डिपेंड करता है नंबर ऑफ माइक्रोब्स पे, कि कितने माइक्रोब्स हैं हमारी बॉडी में. तो उस तरह से मैनिफेस्टेशंस मतलब जो एग्जिस्टेंस है किसी भी डिजीज का वो थोड़ा माइनर हो जाता है. नंबर ऑफ माइक्रोब्स ज्यादा तो सीवियरिटी डिजीज की ज्यादा होती है, नंबर ऑफ माइक्रोब्स कम तो सीवियरिटी डिजीज की कम हो जाती है. In other words, becoming exposed or infected with an infectious microbe doesn't necessarily mean developing any noticeable disease. तो सिर्फ infectious microbe से microbe के टच में आने से या उससे if we just get exposed to infectious microbe, that doesn't mean कि हमें disease हो जाएगी
और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, अगर हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी है तो नहीं भी हो सकती प्रॉब्लम, राइट? So one way to look at the severe infectious disease is that it represents a lack of success of an immune system. तो ऐसे जो लोग हैं जिनमें इम्यून सिस्टम की सक्सेस रेट लैकिंग करते हैं, वो काफी ज्यादा frequently बीमार पड़ते हैं, right? So the functioning of the immune system, like other system in our body, will not be good if proper and sufficient nourishment and food is not available. So naturally इसके लिए क्या चाहिए गुड इम्यून सिस्टम के लिए? प्रॉपर नरिशमेंट एंड फूड, मतलब न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए। हम कुछ भी खाना खाए तो उससे हमारी इम्यून सिस्टम नहीं अच्छी हो सकती, इनफैक्ट बिगड़ सकती है। Therefore, the second basic principle of the prevention of infectious disease is the availability of the proper sufficient food for everyone, right? तो ये जो second basic principle है वो है availability of proper and sufficient food, alright? So ये second basic principle है। first basic principle हमने क्या देखा? हमने देखा कि हम किस तरह से डिजीज मतलब उसके एक्सपोज से ही बच सकते हैं। तो अगर एक्सपोज से भी बचेंगे, राइट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जरूरी नहीं है हमेशा हम एक्सपोज से बच पाए, क्योंकि हम घर के अंदर तो बैठे रह नहीं सकते, राइट, एक्सेप्ट सच पेंडेमिक सिचुएशंस। एनीवेज, बट अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा कि हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी काम करे। हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें न्यूट्रिशियस फूड लेना पड़ेगा, राइट? तो इस तरह से ये दो बेसिक चीजें हम कर सकते हैं टू प्रिवेंट ourselves from getting affected by diseases. The next general ways of preventing, see, we talked about the general ways, ये दो general ways हमने देखे, ठीक है? अब जो specific ways हैं वो हम next session में देखेंगे।